हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट वेलकम बैक टू माय चैनल पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित वेलकम करुच्ची कि आज मैं डिस्कसन करवा फास्ट एड मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन ओटीपल्स नर्सिंग ऑफिसर मोस्ट वेरी हेल्पफुल होगा जाऊँगी। तो फास्ट एड जिते भी क्वेश्चन अच्छी से मध्य टॉप पूरा सब क्वेश्चन ए भितर ही आसो। तो जमा वीडियो को स्किप करेंगे ना मोस्ट इंपोर्टेंट फास्ट एड टॉप 60 MCQ विथ आंसर ठीक अच्छे जमार भी गोटे सिंगल क्वेश्चन में स्किप करेंगे जहाँफल आपने मिस करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट 50टा ठीक अच्छे। तो लेट नक भिडियो स्टार्ट कर आम चैनल आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल रखते जहाँफल भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर आप जिते भी फ्रेंड ग्रुप समस्त को शेयर करूँ समस्ते लाइक कर दिखाते भिडियो को। देखो तो नंबर 1 क्वेश्चन जीवा ये कौन कहूँ ना ये कहला केयर प्रोवाइडर to save life of the victim before medical assistance become available is called ताको हमें कौन कहबा ना ट्रू एड फॉल्स एड फास्ट एड और इमरजेंसी केयर। तो कौन फास्ट एड तो ऑप्शन बी ही जीवा हमर करेक्ट जोटा फास्ट एड हमें बिफोर किसी मेडिकल प्रोसेस बिफोर मेडिकल हॉस्पिटल पठेबा आगु कौन ताको से ट्रीटमेंट कौन कहे हमर कौन फास्ट एड दिया हला। Then next question जीवा what is the purpose of the provide first aid का purpose कौन to the save a person life provide first aid to the patient prevent injury from the progressing or all the above कौन है नाम गोटे पेसेंट लाइफ को मध्य सेव करुचे जोटा कि फास्ट एड मध्य देले टू ए पेसेंट एवं प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर इंजुरी और प्रोग्रेसिंग। तो कौन है ऑप्शन डी ही जीवा हमर करेक्ट आंसर तो ऑल द एबव। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मटेरियल टू बी कीप्ड इन द फास्ट एड बॉक्स एमान को मध्यरु कोड को मटेरियल ता हम फास्ट एड बॉक्स रे न थाए ना हमर स्प्लिंटर रोलर बैंडेज थर्मोमीटर हॉट एयर ओवन एंड द करेक्ट आंसर इज कौन number hot air oven we cannot kept in our first aid box तो ऑप्शन डी ही जीवा हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रेसिंग ऑफ द वुंड इन ए पेशेंट। तो ड्रेसिंग रो पर्पस कौन पाए हम ड्रेसिंग करता ना कहला प्रिवेंट वुंड इन्फेक्शन कंट्रोल ब्लीडिंग असिस्ट वुंड हीलिंग और ऑल द एबव कौन ऑब्वियसली प्रिवेंट करता इन्फेक्शन को कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग मध्य करता एवं वुंड हीलिंग पे असिस्ट से कौन कर हम ड्रेसिंग। तो ऑप्शन कौन हो ऑप्शन डी हो हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल बैंडेजिंग ए वुंड। तो माइंड आम कौन रखा जिते बेले कौन बैंडेजिंग कर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलो एप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन शुड बी यूज व्हाइल द ड्रेसिंग बैंडेज। देन द width and length of the bandage should be sufficient और all the above कौन यहाँ मध्य all the above। माइंड कौन रखी हमें स्ट्रिक्टली कौन एसेप्टिक टेक्निक नहीं कि आम फॉलो करवा देन एंटीसेप्टिक ठीक सॉल्यूशन देवा देन आमर कौन व्हाइट और लेंथ बैंडेज शुड बी पूरा सफिशिएंट थी अच्छे। तो कौन हो ऑल द एबव। देन 6 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्प्लिंटर कीप्ड इन द फर्स्ट एड बॉक्स। तो स्प्लिंटर रो मीनिंग कौन जोटा कि आम फर्स्ट एड बॉक्स रे रखा तार काम कौन कहला टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन टू कवर एंड टाई वुंड फॉर ए ड्रेसिंग फॉर टू कलेक्ट वेस्ट मटेरियल और थोरली एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट कौन टू सपोर्ट ब्रोकन बेन। तो किसी आमर बोन जदि भांगी जाइए फ्रैक्चर होता सपोर्ट देता कौन आमर स्प्लिंटर हुई कौन जिते बेले बोन किसी फ्रैक्चर है सपोर्ट दे था
से रखी कौन फास्ट एड बॉक्स रे। देन क्वेश्चन नंबर 7, which of the following principles should be used while trying the bandage। तो बैंडेज जो आम से टाइम कौन आम को प्रिंसिपल फॉलो करवा कथा। ये कहला सुइटेबल साइज बार शुड बी सिलेक्टेड, यूनिफॉर्म प्रेशर शुड बी मेंटेन व्हाइल टाइंग द बैंडेज शुड नॉट बी टाइड टू टाइटली। तो आम टाइट कर बांधी माने बेसी टाइटली और ऑल द एबव कौन आम ऑल द एबव ऑप्शन टी हो करेक्ट आंसर। देन नंबर 8, व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ ब्रोकन बोन। तो गोटे ब्रोकन जदि आम बोनटा फ्रैक्चर हो जाए ठीक अच्छे ताहले आम कौन सिम्पटम कौन देखा ना पेन एट द साइट ऑफ इंजुरी, स्वेलिंग हेबो, डिक्रीज द लेवल ऑफ मूवमेंट ऑफ द एसोसिएटेड एक्सट्रीमिटी और ऑल ऑब्वियसली जो जगह भांगी थो पेन तो हेबो ही जदि भांगी फ्रैक्चर होइतिबो ताहले कौन देखिथिबे स्वेलिंग हो। देन एठी गला डिक्रीज द लेवल ऑफ मूवमेंट मानेकर फिंगर गोटे बोन फ्रैक्चर थी जदि ए पॉइंट रे हम भांगी जाइए तो भांगी जाइए ताहले कौन मूवमेंट करि पारिबे कि नॉर्मल नहीं। तो कौन हो ऑप्शन डी हो ऑल द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट एड प्रोवाइड ड्यूरिंग फ्रैक्चर इज। फर्स्ट एड प्रोवाइड ड्यूरिंग फ्रैक्चर कौन डू नॉट मूव द फ्रैक्चर एरिया अननेसेसरी, comfort the patient and make arrangement to get him to the hospital immediately, using a splint, keep the fracture site stable or all the above। The correct answer is कौन not all the above। Then 10 number, first aid provide during burn patient। first aid हम कौन move the patient away from the cause of burn, keep the burn area immersed with cold as needed, if clothes are stuck to the body remove them or all the above। कौन यहाँ भी मतलब all the above जिते बेले बर्न हो पेसेंट कौन जो जगह बर्न हो से एरिया रो आम कौन ताको आनिबा। देन कीप द बर्न एरिया मनकर गोटे बर्न हो मनकर फिंगरटा बर्न हो गला तो से फिंगर कौन इमिडिएट कौन आइस पैक दिया हुए कि पानी बुड़े रखिए कोल्ड वाटर रे जहाँफल आम कौन पेनटा किसी समय रिलीफ हे। इफ द क्लथ इज स्टक जदि मनकर ड्रेसटा कपड़ाटा लगी जाए आप हाथ में पिंधि से हाथ में लगी जाए तो आम कौन टू रिमूव करवा तो कौन हम ऑल द एबव। देन 11 नंबर, इन प्राइमरी केयर ड्यूरिंग ब्लीडिंग इज नॉट इंक्लूड। जिते बेले हम प्राइमरी केयर कर ब्लीडिंगटा इंक्लूड मैंने कौटा कर न थाए ना कीप द एफेक्ट एरिया बिलो द लेवल ऑफ द हार्ट, टॉनिफाइड, comforting the patient, elevate the affected area। कौन हेब कमेंट करंतु समस्ते कि आमर कौन हेब सब बेले मन रखिए जिते बेले भी आम कौन किसी तो ब्लीडिंग होची जदि इनकेस मतलब स्नेक बाइट हेब ताहले कौन कीप द एफेक्ट एरिया बिलो द लेवल ऑफ हार्ट आम कौन रखा ठीक अच्छे जो कौन मनकर ब्लीडिंग है किंपा आमर किसी बाइट है ठीक अच्छे मनकर धरतु स्नेक बाइट से टाइम पेसेंट को आम कौन एफेक्टेड एरिया बिलो द लेवल ऑफ हार्ट आम रखा तो कौन ऑप्शन ए ही आमर करेक्ट आंसर। Then which vaccine is used for burn patient? को वैक्सीन यूज करा फॉर बर्न बीसीजी, डीपीटी, टीटी एंड एमएमआर। कौन समस्ते जानी कौन ऑब्वियसली किसी इंजुरी कि कट है से कौन टॉक्सिक टिटानस आम कौन टिटानस दे था टीटी ऑप्शन सी ही आमर कौन करेक्ट आंसर।
Then, which association was first adopted the fastest? को association ଆମର first adopted କରିଥିଲେ ଆମର fastest? ନା Red Cross Society, ST Jones Ambulance Association, WHO or UNICEF? जल्दी कमेंट करंतु कौन किए ना ଆମର एम्बुलेंस एसोसिएशन SJAA किए फास्ट करथिले ना ଆମର SJAA। Then आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन, what material should be present in the first aid box? को material ता माने रखिबा कोन इन फर्स्ट एड बॉक्स रे ए कहला बैंडेज प्लास्टर देन कहला पीसेस ऑफ स्टेराइल गॉज सीजर सेफ्टी पिन नीडल ट्विजर डेटल स्पिरिट पेनकिलर स्प्लिंटर ऑल द अबव कौन है तो सबू आम रखी पारिबा ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। Then question number 15, what is the breaking and cracking of bone cut? जदि किसी बोन ब्रेक हो किंबा क्रैक हो ताको आम कौन कहबा ना बोन कैंसर फ्रैक्चर डिसलोकेशन और स्प्रेड कौन कहबा आम हमको कौन फ्रैक्चर। देन टेंडन इंजुरी इज न जदि टेंडन टा इंजुरी ताको आम कौन कहबा फ्रैक्चर कहबा स्टेन कहबा डिसलोकेशन कहबा और स्पैरिंग कौन कहबा। क्वेश्चन नंबर 16 ना मन जदि टेंडन जदि किछि इंजुरी तो ताको आम कौन कहि थाउ ना मन स्ट्रेन। देन क्वेश्चन नंबर 17, which of the following test can be done for the doping if any player taking drug illegally? कौन करा है ना स्पुटम सैंपल नेबा यूरिन सैंपल हार्मोन्स द एबव कौन हम ना हमर यूरिन सैंपल ऑप्शन बी इज हमर करेक्ट आंसर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, which is the first principle to avoid injury under the theory of sports training? कौन फिजिकल हेल्थ ना कूल डाउन वार्म अप और कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, which is correct answer is हमारा ऑप्शन बी वार्म अप। Then question number 19, stretching of or rupture of a ligament is called जदि ligament की rupture हिजबो किंबा स्ट्रेचिंग हिजबो ताके कोन कह स्प्रेन स्ट्रेन कंट्यूजन और कन्क्लूजन कौन कहबा। तो कौन कहबा स्प्रेन स्ट्रेन केते बोले कहबा एठी कहिथिली जदि आमर कौन टेंडन टा जदि आमर फ्रैक्चर हिजबो ताहले हम कह स्टेन कहबा पेरिन होची आमर कौन लिगामेंट। Then give a next question, breaking of bone in more than one place is called जदि बोनटा ब्रेक हो वन और मोर प्लेस ताको कोन सिंपल फ्रैक्चर कहबा मिक्स मल्टीपल फ्रैक्चर और ग्रीनसिक फ्रैक्चर एंड द करेक्ट आंसर इज कोन हिजबा हमर कोन मल्टीपल जदि वन एंड मोर
फ्रैक्चर होता है कौन मल्टीपल फ्रैक्चर ठीक अच्छे देन ब्रेकिंग ऑफ बोथ बोन एंड स्किन इज कॉल्ड जदि आम कौन बोन एवं स्किन टा ब्रोकेन होता कौन सिंपल मिक्स मल्टीपल फ्रैक्चर और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक केस आम कौन कहवा ना आमर मिक्स्ड फ्रैक्चर मिक्स कहीं मिक्स बोले कौन बोथ आम कौन बोन प्लस कौन स्किन इनवॉल्व अच्छे से कौन मिक्स फ्रैक्चर देन कहला ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ मसल ड्यू टू इंजुरी इज कॉल्ड जदि ब्लू डिस्कलरेशन देखा जाए मसल ताहले ड्यू टू इंजुरी कहार इंजुरी नाम स्पेरिंग स्टैंड कंफ्यूजन और एवर्सी 22 केते ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कौन कंफ्यूजन the next question what is a fracture that is possible due to the damage to the internal soft organ of the body after breaking bone कौन नाम complex bone fracture simple fault green stick defect or multiple fault the correct answer is कौन होइबो कमेंट करंतु समस्ते हमर कौन complex bone fracture option A is the correct answer. Then come to the next question. What are the hallmark symptom of broken bone? Broken bone रो hallmark symptom टा हमरा कौन देखा ଯିବ True blue, pain and swelling, bleeding bone and rubbing or all the above. कौन सब देखा ଯିବ कौन option D is the correct answer. Then question number 25. Which fracture mainly occur in the children below the age of 12 in which bones are twisted and do not be break. Green stick fracture, simple, multiple or complicated fracture कौन green stick fracture option A is the correct answer. तो आज क्लास आपण मानको केमती लागला फर्स्ट एड रो नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो रे अपलोड हे आमर कौन 26 to 60 जाए तो आपण मैंने केमती लागला कमेंट माध्यम निश्चय आपण मानकर भैल्यूएबल टाइम देख कमेंट मत निश्चय जब जो किसी क्वेश्चन कौन रंग थी किसी जानवे थी ताले कमेंट बॉक्स में मत निश्चय जने से विषय में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू जय जगन्नाथ।